I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Department Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video, we are going to discuss a previously asked question. The question was, write the procedure for communication of sanctions. So let's start. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. Yes, this is a HP FR 2009 document, and let me show you the chapter now. In which chapter this rule is mentioned about the communication of sanctions. So this is chapter number 2, that is general system for financial management, and in chapter number 2 there's a rule 17 that has mentioning of the communication of sanction, as you can see in your screens. So let's start. All the financial sanctions and the order issued by the competent authority shall be communicated to the accountant general and the treasury officer concerned, duly signed in ink, and the procedure to be followed for the communication of financial sanction is discussed as under. So let's start the discussion now. All the financial sanctions issued by the department which relate to the matter concerning the department and on the basis of which payment are to be made or authorized by the treasury officer shall be addressed to him, and original sanction shall be attached with the bill. Original sanction bill के साथ लगेगी. All the other sanction shall be accorded in the form of an order which need not to be addressed to any authority. However, a copy of each thereof shall be endorsed to the accountant general and the treasury officer concerned. In the case of non-recurring contingent and the miscellaneous expenditure, the sanctioning authority may, where required, accord sanction by signing or countersigning the bill or voucher, whether before or after the money is drawn, instead of by a separate sanction. तो उसी में कई बार नॉन रिकरिंग के केस में उसी में ही वो बिल और वाउचर में ही सैंक्शन का अकॉर्ड लगा देंगे, जो भी सैंक्शन का अथॉरिटी लेटर है. All the orders conveying sanction to the expenditure shall be expressed both in words and figure. उसको words and figure दोनों में लिखा जाएगा कितने अमाउंट की सैंक्शन है. Sanction accorded by the head of department shall be communicated to the accountant general and the concerned treasury duly signed by him or duly authorized officer to his office. All the orders conveying sanction to the grant of additional to pay such as special pay allowance, personal pay shall contain a brief summary of the reasons for the grant of such additional to the pay as to be enable the accountant general and the concerned treasury officer to see it is correctly termed special allowance and personal pay. उस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें स्पेशल मेंशनिंग करना पड़ेगा ये किससे संबंधित है, अगर वो स्पेशल अलाउंस और पर्सनल पे से संबंधित है. Copies of all financial order and sanction issued by the government shall be supplied by the accountant general, and the sanction accorded by the competent authority to the grant of land and alienation of the land revenue other than those in which assignments of the land revenue are treated as cash payment shall be communicated to the audit officer and the account officer in a consolidated monthly return giving the necessary details. So I think this is very simple procedure of the communication of sanction. किस तरह से अगर sanction को communicate करने का procedure दे रखा है, एक बार फिर से देखिए. All the financial sanctions issued by the department which relate to the matter concerning the department and on the basis of which payment are to be made shall be addressed to him or authorized by the treasury officer shall be addressed to him, and the original sanction shall be attached. जब भी हम treasury officer में treasury में कोई भी bill देंगे तो उस वक्त उसकी sanction लगाना जरूरी है. ये मेंशन किया गया है 1 में 17 रूल के फर्स्ट क्लोज में ए पार्ट में. ऑल द अदर सैंक्शन शैल बी, और इसमें अगर एक बात और की गई है, अगर नॉन रिकरिंग का केस है, नॉन रिकरिंग कंटीजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी में वेयर रिक्वायर्ड अकॉर्ड द सैंक्शन बाय साइनिंग और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर, उसी में ही वो साइन कर देगा. तो उसमें कोई सेपरेट सैंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ सेपरेट सैंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट बी पॉइंट है, ऑल द अदर सैंक्शन अकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर which need not to be addressed by authority. However, a copy each thereof shall be endorsed to the accountant general and the treasury officer. अगर उसकी आवश्यकता नहीं है सैंक्शन लगाने की तो इसमें कॉपी की एंडोर्समेंट जरूर लगाई जाएगी. नेक्स्ट, ऑल ऑर्डर्स conveying sanction to the expenditure shall be expressed both in words and figure. इसको बिल्कुल both words and figure दोनों में लिखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी ना हो. पर्सनल पे के अलाउंस में स्पेशल एक अलग से हेड बना के उसमें स्पेशल मेंशन किया जाएगा बेसिकली कि वो पर्सनल या स्पेशल अलाउंस या पर्सनल पे से संबंधित है. एंड कॉपी ऑफ द ऑल फाइनेंशियल ऑर्डर्स एंड द सैंक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट शैल बी सप्लाइड टू द अकाउंटेंट जनरल. बिल्कुल उसको सप्लाई किया जाएगा जो भी संबंधित दस्तावेज होंगे. तो आई होप दिस इज क्लियर. ये सिंपल से पॉइंट्स आपने याद रखना है. दिस इज रूल नंबर 17 HPFR 2009 चैप्टर नंबर 2. थैंक यू ऑल फॉर वेल्युएबल टाइम.